Hello everyone. Here we are going to discuss merits and demerits of HUF, Hindu Undivided Family Business Organization. One of the important merit of HUF is its easy formation. HUF is easy to start as registration and agreement is not required for its formation. As we have discussed earlier, agreement is necessary for the formation of partnership firm, and so far as Maharashtra state is concerned, registration of partnership is compulsory, but such legal requirements regarding registration and agreement is not required for the formation of HUF. So its formation is quite easier than that of partnership. Again, there is no restriction on minimum and maximum number of members. It consists as many members as are in the family. It consists of all the family members, and so there is no restriction as to minimum and maximum members. As we have discussed, under partnership, maximum 50 members can work as a partner in a firm, and there is requirement of at least two persons, that is minimum member under partnership. So such restriction as to minimum and maximum number of members uh, is not applicable under HUF. It comes into existence as per Hindu law, which is a personal law, because this business organization is popular and prevailing among Hindus only. So it comes into existence as per the Hindu Succession Act. The next important merit is protection of co-partners' interest. As we have already discussed that the liability of Karta is unlimited, but the liability of co-partner is limited. Co-partner have right to demand partition, and Karta takes utmost care of their interest. So under HUF, the one of the merit is liability of co-partner is limited, and secondly, they have right to demand partition of family business. If there is any conflict with regard to uh, operation of business, with regard to activities conducted by the way karta perform or the way karta conduct the business, if there is any conflict regarding that, then the co-partners have right to demand partition of HUF business. Again, there is Karta who takes the utmost care of the interest of the co-partners. So under HUF, there is full protection of co-partners' interest as compared to that was in firm. The interest of partners are not that much protected, which is available under HUF. Next one is quick and prompt decision. Karta is the senior most family member. He has experience, knowledge of family business. He takes all business decisions. He can take right and quick decision at right time on the basis of his knowledge, experience. So it is one of the important merit that quick and prompt decision is possible under HUF, which is somewhere lacking under partnership firm. Each and every partner has to discuss or consult with other partner before taking any decision. So
We can say quick and prompt decision is not possible under partnership firm, which is very easily possible under HUF due to karta. Next one is on job training, that is members on the job training. The members of HUF business get training of business skill automatically. They observe the management of karta, they learn some business tactics, some nahi, many business tactics we can say. क्योंकि एच यू एफ के केस में ऐसा होता है कि बच्चे शॉप पे जाना शुरू कर देते हैं, अपने अपने से सीनियर मेंबर्स को वो ऑब्जर्व करते हैं और देख देख के ही बहुत सारी चीज़ें वो ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। कस्टमर्स को अटेंड करना, उनको कन्विंस करना, तो उनकी अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करना, नई नई जो भी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट उनके शॉप में आती है या वो बिज़नेस में इंट्रोड्यूस करते हैं, उन चीज़ों को कस्टमर्स के सामने लाना, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल, कन्विंसिंग पावर, टैक्टिक्स उनमें ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती हैं। तो उनको अलग से सेपरेट ट्रेनिंग लेने की, बिजनेस करने के लिए सेपरेट ट्रेनिंग की उनको ज़रूरत नहीं होती है। दे वी कैन से दे गेट दीज स्किल्स ऑटोमेटिकली through their own observation. So this is one of the important feature. Next one is co-partner's liability. The liability of co-partner is limited up to the extent of their share in HUF business. So their personal property is not or cannot be used for the payment of liability of HUF business. So there is protection for the personal property of co-partner. Only the property of personal property of karta will be responsible for repayment of liability of HUF business. So here we can say all these are the merits of HUF. Now we will discuss the demerits of HUF, and one of the demerit is unlimited liability of karta. Karta has to face the risk of unlimited liability if business assets are not sufficient for the payment of liabilities. Then the personal property of karta is used for the payment of business liability. So we can say the unlimited liability of karta is one of the demerit of this form of business organization. The second demerit is limited financial and managerial resource. The funding of HUF business are limited. The ancestral property is used as capital of HUF business. And the karta may not possess expert managerial skills, so there is limited scope for expansion. The capital under partnership firm will be introduced by the or can be introduced by partners only, but under HUF no such provision is applicable, or there is absence of such provisions under HUF. The capital is limited to the extent of ancestral property, and the managerial skill is limited, or we can say the scope of managerial skill is limited up to the experience of karta. So karta may or may not possess expert managerial skill, so there is limitation as to the scope for expansion growth of HUF business. पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी है वही कैपिटल कहलाएगी HUF बिजनेस में, क्योंकि इस HUF बिजनेस में कहीं ऐसी प्रोविज़न नहीं है कि जो मेंबर्स फैमिली में बाय बर्थ आते हैं तो वो जब आते हैं तो बिजनेस में उन्होंने कैपिटल लाना चाहिए। ऐसी प्रोविज़न्स हमने फर्म में देखी है कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है वो कैपिटल लेके आता है, बट ऐसी कैपिटल न्यू कैपिटल एडिशन की प्रोविज़न HUF में नहीं है। और ना ही यहाँ पे स्कोप होता है
न्यू मैनेजर्स को अपॉइंट करने का या कोई एक्सपर्ट को अपॉइंट करने का, हायर करने का, क्योंकि ऑलरेडी इनका कैपिटल लिमिटेड होता है, इनके पास लिमिटेड फंड होता है। तो जो भी बिजनेस चलेगा वो कर्ता को जितना नॉलेज है बस उसी बेसिस पे, उसका जो मैनेजरियल स्किल जितना लिमिटेड है उसी बेसिस पे वो बिजनेस चलाएगा। तो यहाँ पे ग्रोथ और एक्सपांशन पे भी लिमिटेशन आ जाती है एचयूएफ में। Next one is no separate legal status. HUF is not considered as an artificial legal person, so it does not enjoy a separate legal status which is enjoyed by the company. Company is regarded as an artificial legal person which is created by law. So company and its members both are considered as two different persons. Members are considered as natural persons, whereas company is considered as an artificial legal person. But such separate legal status is not given to HUF, and so there is no separation of power. We can say there is unlimited liability of karta. So these are the various disadvantages, or we can say demerits, regarding HUF. Next one is partition of business. The number of members are more in HUF business. There can be conflicts and disputes. So the co-partner may be dissatisfied with the management of Karta, and this can leads to partition of business. पार्टीशन यानी बिजनेस डिवाइड करना या बिजनेस के हिस्से हो जाना। तो हमने जैसे देखा कि यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम लिमिटेशन नहीं है मेंबर्स की, तो एक ही बिजनेस में बहुत सारे फैमिली के मेंबर्स ज्वाइन कर सकते हैं उसको। तो आपस में इनके मतभेद हो सकते हैं, इनमें कलह हो सकता है, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, कर्ता के मैनेजमेंट से या कर्ता के वर्किंग से वो नाखुश हो सकते हैं। तो ऐसे समय पे उनको राइट भी दिया है कि वो पार्टीशन क्लेम कर सकते हैं, बिजनेस के दो हिस्से करवा सकते हैं या बिजनेस में पार्टीशन हो सकता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, डीमेरिट है एचयूएफ का। नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स। तो यहाँ पे एफर्ट्स यानी होते हैं मेहनत और रिवॉर्ड्स यानी होता है मेहनत का फल। सो एज हमने देखा कि करता ही मैनेजर है एचयूएफ बिजनेस का, अपने नॉलेज और स्किल से, अपनी मेहनत से वो बिज़नेस को आगे बढ़ाता है। तो ऐसे केस में मेहनत सारी, डिसीजन मेकिंग, रिस्क बियरिंग सारी कर्ता की होती है, जबकि उसके मेहनत का फल प्रॉफिट के तौर पे जो आता है वो सारे को पार्टनर्स में, सारे मेंबर्स में बांट दिया जाता है। तो हम बोलेंगे कि द रिवॉर्ड्स ऑफ बिजनेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द co-partners. द हार्ड वर्किंग as well as the inefficient co-partner will get equal share in the profit. तो जो हार्डवर्किंग मेंबर है या इनएफिशिएंट मेंबर है तो उन सभी को इक्वल शेयर मिल जाएगा, जबकि इन रियलिटी ऐसा होना चाहिए कि जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसको ज़्यादा फल मिलना चाहिए, उसको प्रॉफिट में ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए। लेकिन एचयूएफ के केस में ऐसा नहीं है, इनके प्रॉफिट शेयरिंग चेंज होते रहते हैं, प्री डिटरमाइन नहीं रहते, फिक्स नहीं रहते हैं। तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि यहाँ पे मेहनत करने वाला और मेहनत का फल पाने वाला, इनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, मेहनत कोई और करता है और उसका फल सबको इक्वल मिलता है। सो दीज आर द वेरियस डिसएडवांटेज ऑफ एचयूएफ। थैंक यू।